Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is All India Radio. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। हम उन पर चर्चा भी करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। Thank you, Nikhil. A quick look at the headlines. Under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, 2 crore 18 lakh Pakka houses completed so far. Key domestic indices witnessed losses for fifth straight session. Sensex closes below 57,700 level. Nifty settles below the 17,000 mark. And gold rises to trade at 58,000 rupees per 10 gram mark for April contracts at MCX. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकान बनाए गए। घरेलू शेयर बाजारों में लगातार 5वें सत्र में गिरावट का रुख। सेंसेक्स 57,700 अंक और निफ्टी 17,000 के स्तर से नीचे बंद हुआ और अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। The government has informed that under the Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin PMG, 2 crore 18 lakh Pakka houses have been completed till the 11th of this month. In a written reply to a question in the Rajya Sabha, Minister of State for Rural Development Sadhvi Niranjan Jyoti said that under the scheme, states and union territories have already sanctioned 2 crore 85 lakh Pakka houses to beneficiaries out of a total of 2 crore 94 lakh houses allocated to them. She informed the House that the government is targeted to construct 2 crore 95 lakh Pakka houses with basic amenities by March 2024. और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अविनाश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे जी। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अविनाश जी, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत इस महीने तक अब तक 2 करोड़ 18 लाख पक्के मकान बनाए जा चुके हैं और आपको ये बताएं कि ये 2024 तक कुल 2 करोड़ 95 लाख पक्के घर आवंटित किए जाने हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी सफलता सरकार ने यहाँ पर अर्जित कर ली है। और खास बात यह है कि इन घरों में सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिर्फ घरों की बात नहीं है, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इससे बढ़ावा मिल रहा है। कई सारे सेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसके पर आपके क्या विचार हैं? बढ़िया। देखिए, ये जो स्कीम है हाउसिंग के लिए, ये बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है और मुझे लग रहा है कि देखिए, गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से प्रॉमिस किया था जी हाउसिंग फॉर ऑल, तो मेरे ख्याल से ये वो टारगेट को अचीव करने में डेफिनेटली समर्थ है। आने वाले सालों में भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की हाउसिंग की शॉर्टेज दिख रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आगे भी चलेगा। और आम जनता और जो जो लोअर इनकम ग्रुप्स है, उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हाउसिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। और इस प्रयास में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया है जी, आगे भी होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। Avinash, when we talk of housing, infrastructure, building of that, I think jobs, a critical area for the government also to address, and also giving a boost to the infrastructure and cement industry, the iron industry, the construction, that will also happen? Yeah, definitely. See, when you talk about housing, you have to include, other inputs like steel, cement, because these are also building blocks in the overall infrastructure kind of sector. And I think, this scheme is definitely the fact that it obviously gives a fillip to the real estate sector, the non-banking finance companies, the housing finance companies. So it has a multiplier impact on the economy.
And obviously it goes a long way in ensuring that, a lot of employment also gets generated. Apart from the fact that these infrastructure assets, that is housing, schemes, obviously not only generate infrastructure, that is physical infrastructure, but they also generate a lot of employment for people across, pan-India. So that is why I would believe that, this is definitely a very positive kind of effort from the government, because it generates a multiplier impact, and that obviously leads to a better gross domestic formation in the country, and which is the need of the hour. Right, absolutely. We move on to our next story, and this is about the Post Payment Bank. The government has informed the Lok Sabha that India Post Payment Bank, through its 650 branches, provided services in all districts through 1.38 lakh post offices and access points. In a written reply, Minister of State for Communication, Devusina Chauhan, said that the government has approved the revision of project outlay for India Post Payment Bank by 820 crore rupees, taking the total to 2,255 crore rupees against the earlier approved outlay of 1,435 crore rupees to enable the bank to meet regulatory requirements. The minister also informed that India Post Payment Bank is a scheduled payment bank owned by the government and was established in 2018, covering 631 districts in the country with 650 branches in one go. Avinash, when we talk of, delivery at the doorstep of everybody, the common person living even in remote areas, post offices have always been, through the past years, one point of contact, one representation of the government, even when other representations were not there, for the people to connect with. And this is really going to, you believe, really help last mile delivery? Avinash? Yeah, I think I couldn't hear the last part of the question. If you could please repeat, the last part of the question, please. Definitely. So when we talk of, last mile delivery, there's always a medium to take it through, and post offices have traditionally played many roles, very strong emotional connect with the people. So do you feel that all this and the investment into this is going to really beef up last mile delivery also? Yeah, definitely. You see, because looking at the kind of network India Post has and the kind of last mile, connectivity, which is very important, when you want to directly to the B2C kind of customers. That time, this last mile connectivity is very important, and I think it will go a very long way in ensuring that this service is delivered, to the last possible, geographical region in the country. So people will benefit, volumes will increase, and most importantly, at the end of the day, unless you have a very good geographical reach and a very good last mile connectivity kind of distribution network, these kind of initiatives will not be successful. So considering the kind of network India Post has, I would believe that it's definitely a good positive. I mean, you will be able to see results over the next 2 to 3 years, but it is definitely going to be a right step in the right direction. अविनाश, जब पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की गई थी लगभग 80% जो लेन देन होता था वो नकदी के माध्यम से होता था, लेकिन आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो शायद 20% के आसपास का लेन देन ही मतलब नकदी में होता, बाकी सारा डिजिटल होता जा रहा है। और खास बात ये भी देखी जा रही कि पोस्ट पेमेंट बैंक को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसके भविष्य को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि डिजिटल जो प्रोसेस कोविड के बाद शुरू हो गया और यूपीआई का जो माध्यम गवर्नमेंट ने चुना, वेरी डिजिटल अभी हर ज्योग्राफिकल एरियाज में भारत में अभी बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी यूपीआई आने के बाद लोगों का जो ट्रांजैक्शन करने का तौर तरीका है वो पहले समय से काफी बदल गया है। इनफैक्ट काफी कन्वीनियंस भी लोगों को मिल रहा है, काफी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव भी है। तो इससे क्या हुआ है कि सर्विस स्टैंडर्ड जो पहले नहीं मिलते थे वो अभी लोगों को आम तरीके से मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, डिजिटल का जो परसेंटेज है वो आने वाले कम से कम 5-10 सालों में और भी तेजी से बढ़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि कैश के ट्रांजेक्शन बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कहीं ऐसे सेगमेंट्स है, गांव है, टाउन्स है, जहां पे अभी भी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं। तो जहां पे इंटरनेट की थोड़ी बहुत सुविधाएं थोड़ी सी कम है, वहां पे हो सकता है कि डिजिटल थोड़ा सा लेट पहुंचे। लेकिन अगले 5-10 साल में हमको लग रहा है कि इंडिया एक प्रॉपरली एक वेल स्ट्रक्चर्ड डेवलप्ड एक डिजिटल इकोनॉमी होगी और इसका फायदा नॉट ओनली आम कस्टमर को मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री, बैंकिंग, ये सारे रिलेटेड जो सेक्टर है उनको भी डेफिनेटली इस डिजिटल मीडियम से मिलना चाहिए।
Avinash, when we talk of the digital medium, in fact, India has been a huge success story. Nobody had thought a few years back that digitization would really change our lives in such a big manner. Now, more and more people, irrespective of whichever strata they are from, they're really moving into digitization. We have great numbers coming in. Do you think, and human behavior takes some time to change, how do you think has, fintech changed investing behavior in India? Because we have like more than 10 crore DMATs in India. No, I think electronic medium and the digital medium is definitely going to make a lot of investors invest in the country. And already, I think at the end of the day, you must realize that even when COVID happened, because of the digital media, most of the exchanges, most of the stockbrokers, most of the financial intermediaries could still function. Right. Unlike, the earlier days when everything was not digitized, it was not possible for exchanges to operate, electronically. But today, I think with digital medium coming in, we have found that exchanges were, throughout the COVID era, they were able to function. Stock markets, stock brokers were able to do their functions properly, risk management, execution of trade. So all these things have gone a very long way. And I think this is going to help the entire investment community because this is not only fast, but it is very transparent. And obviously, it is very convenient. So all these factors put together is going to actually play a big role in the financial literacy and in the financial development of at least the stock markets, the equity investors in our country, which are growing, rapidly. You rightly mentioned that now we've got only 10 crore investors out of a population of 130 crores. So the headroom for growth is quite significant, even from going, from this number onwards. Right, well said. और जहां तक आप और हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो डिजिटलीकरण ने हमारे देश में बहुत सारी योजनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट करने में काफी मदद की है और डिजिटलीकरण ने कई सारी योजनाओं का फायदा जन जन तक पहुंचाने में बहुत ही ज्यादा सुविधा भी पहुंचाई है। और सरकार ने कहा भी कि देश में राशन कार्डों का 100% डिजिटलीकरण हो गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि 99% से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ दिया गया है और उन्होंने जानकारी दी है कि देश में 19 करोड़ 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। अविनाश जी, जब सारे राशन कार्डों का डिजिटलीकरण हो चुका है, इन्हें आधार से जोड़ा जा चुका है, तो बहुत आसानी हुई है लोगों तक ये सुविधा पहुंचाने के लिए। सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा ये रहा है कि पैसा अधिक से अधिक लोगों के फायदे के लिए ही खर्च हो रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से आधार से कनेक्टेड जो रेशन कार्ड्स की आपने बात की, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हुआ है जी। पहले तो बहुत सारी फ्रॉड, बहुत सारे पिल्फरेजेस होते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद जो भी पैसा गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ट्रांसफर करती है, प्लस जो रेशन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आधार से कनेक्टेड है, उनका काफी डेटा अभी इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज होता है, जहां पे कोई मैनिपुलेशन या फ्रॉड करने की गुंजाइश नहीं होती, प्लस एफिशिएंसी आती है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, जैसे जैसे समय आगे जाएगा, मुझे लग रहा है कि हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत एफिशिएंट होगा। लोगों के बेनिफिट के लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स अनाउंस करती है, जो भी बेनिफिट देती है, उसका पूरा लाभ पूरे देश को मिलेगा, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिकली हम आधार से कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का है, और आने वाले कम से कम 3-5 सालों में मुझे लग रहा है कि इससे हमारा जो फैब्रिक है, सोशल फैब्रिक है, लोगों का लाइफस्टाइल है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी काफी इम्प्रूव होने की गुंजाइश है। Avinash, in fact, when we talk of technology, we also understand that the mobile has played such an important role in actually mobilizing the economy. Literally, we have the next story with the Union Minister for Commerce and Industry, Mr. Piyush Goyal, has said that exports of mobile phones from India has gone up to 6.62 times in April to January months of 2022-23 as compared to the same period in 2013 and 14. In a tweet, Mr. Goyal informed that exports of mobile in the 10 months of 2013 to 14 was to the tune of only 10,352 crore rupees, which is now increased to 68,617 crore rupees. Talking of this, and Avinash, wanting to link it with the IT and tech sector performances, how do you see that? We'll of course come to a detailed performance of the stock market, and we'd love your expert inputs on that later on in the program. But the mobile growth of this, are exports growing, and how do you see it affecting our IT and tech sector?
No, I think definitely, with mobile exports now gaining traction, plus the fact that now recently, a lot of global companies coming here and setting up manufacturing facilities is going to go a long way in exports from India, because India is one of those countries where exports are considered to be quite competitive. The skill force, the managerial kind of capability of Indian workers is considered to be quite top class. And that is the reason we have found that, manufacturers of the famous iPhone have also decided to shift manufacturing bases from China to India. And that is definitely a big plus, because, that actually not only improves the foreign direct investment fabric in our country, but it shows the confidence of global investors in a growing economy like India. As far as the technology part is concerned, I believe that, the software technology companies are definitely doing well on the services side. But this will offer a very big opportunity for even Indian companies to cater to domestic market requirements, which frankly, as of now, largely caters to the US and the European markets. So I think both the hardware and the service-oriented companies from the technology space are going to benefit significantly, and it is because that is one of the biggest factors which will help Indians get better telecom products at very competitive prices. Avinash, when we talk of India, a lot of people across the world also look at it as a place where, manufacturing is done, assembly is done, production is done. In terms of technology, do you think our research and development and upping the level of the quality, we have a role to play there also? Yeah, definitely. Basically, in manufacturing, telecom, basically telecom equipment, mobile handsets. I think that is one thing which obviously over the years, as investment comes in India, most of the companies which are set up in India on Indian soil are definitely going to benefit from the benefit of technology transfer. It may happen in the next 3 years or in the next 4 years, but definitely whenever any investment comes in the country as FDI, you can be rest assured that technology transfer will happen. And most importantly, it will benefit the local, IT companies, the local technology players, which eventually will help them grow the markets, in a bigger way. So it may not happen immediately, but right. next say 3-4 years, it's very much possible. Okay. और कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं तो शेयर बाजारों पर नजर डाल दी जाए। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज लगभग 0.5% के आसपास नुकसान दर्ज हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 57,600 से नीचे जाकर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 17,000 अंक के स्तर से नीचे आ गया। वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के चलते लगातार 5वें सत्र में इस तरह की गिरावट देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.59% के नुकसान से 344 अंक लुढ़ककर 57,556 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.42% की गिरावट से 71 अंक नीचे आकर 16,972 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.1% की बढ़त दर्ज हुई। Key domestic share markets today closed around 0.5% down. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended below the 57,600 level, and the Nifty at the National Stock Exchange settled below the 17,000 mark. Both indices witnessed losses for the fifth session in a row amid mixed cues from global share markets. The Sensex declined 344 points or 0.59% to finish at 57,556. The Nifty also fell 71 points or 0.42% to settle at 16,972. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended flat and the small-cap index added 0.1%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, 9 rose while 21 fell. Asian Paints surged 3%, Tata Steel climbed 2.1%, and Titan gained 1.8%. On the other hand, IndusInd Bank declined 1.9%, Reliance fell 1.7%, and Hindustan Unilever slipped 1.6%. In sectoral indices at the BSE, 10 sectors logged gains, while 10 indices witnessed losses. The services index climbed 1.8%, utilities gained 1.2%, power index rose 1.1%, metal and consumer durables added 1.1%. On the other side, telecom sector declined to 1.2%. BankX fell 0.9% and financial services index slipped 0.8%. The overall breadth was negative as shares of 1,518 companies rolled while shares of 2,011 companies fell. A total of 114 shares remained unchanged. Falling for the fifth
consecutive session, Avinash? Is it time? In fact, the crisis in the U.S. banking system making us all see red. So is this just, this 5-month low, is it only a blip? Because the Fed chief had earlier said that the hikes would be data dependent. So what's the data going to look like now in the near future? Yeah, I think very clearly in the very near term, what happens in the US market is going to immediately get mirrored in the Indian markets, and that is exactly what we saw today. The market opened on a positive note but was not able to manage its upside, and the stock and the markets today went back in negative territory. We are below 17,000, which is a very concerning factor, because globally, we have found that during the day, Dow futures, Nasdaq futures, the FTSE futures, even the Singapore Nifty, Nifty index futures are down significantly. So obviously what happens in US markets today, that is tonight, is going to be very crucial. Most importantly, our expectation is that now the Fed meeting on 22nd is going to be a very crucial meeting. Most market researchers expect that this time there will be no interest rate hike because of the recent banking bankruptcy problem which has occurred in the US. Mm. Banks going into bankruptcy, a lot of banks sitting on a lot of M2M bond losses. I would believe that, only if the Fed actually comments that interest rates could get paused for a reasonable amount of time, the markets would definitely bounce back quite sharply. Till that time, the markets are going to remain extremely volatile. In fact, the markets would obviously look at this commentary from the Fed governor, more importantly on the 22nd. And till that time, markets in India would obviously be very erratic. Of course, another reason for the markets to fall today and in the past few weeks has also been for the fact that apart from the banking crisis in US, the FIs have been selling quite aggressively. In fact, today also they were sellers to about 1,500 crores. So even if if this liquidity goes out from the Indian markets, plus if the US markets is not going to bounce back soon, that means that the Indian markets could possibly see a little more volatility in the coming few days, at least till the coming week, before we see some clarity from the Fed meeting. So till that time, I would suggest investors should be careful. The volatility in the market is very sharp, and they should be careful in investing in such volatile kind of markets. Right. और अविनाश, एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा। नो डाउट कि जब इस तरह की स्थितियां मार्केट में हमें देखने को मिल रही तो निवेशकों का काफी नुकसान तो उन्हें जरूर हुआ होगा, लेकिन एक जो चीज ये है कि अप्रैल में जो मीटिंग होनी है मौद्रिक समिति की, उस मीटिंग में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी सारे जो सेक्टर्स, खासतौर पर इंडिया में फूडिंग के सेक्टर्स हैं और इस तरह के इससे संबंधित जो सेक्टर्स हैं, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा मार्केट को और भी लॉस उठाना पड़ सकता है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि बाजार में ये जो बैंकिंग सेक्टर का बैंकरप्सी का जो डेवलपमेंट हो गया है, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन के बारे में सोच रहे थे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बैंक्स का जो स्थिति अभी यूएस में है, अभी लोगों का डर ये है कि कोई और 2-3 बड़े बैंक्स बैंकरप्ट ना हो, कोई तकलीफें ना हो। अभी भी माहौल थोड़ा सा कॉशियस का है, और इसका जो रिजल्टेंट इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज पे रहेगा, स्पेशली आईटी कंपनीज पे रहेगा, जो ये बैंक्स को अपने कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जब तक बैंकिंग सिस्टम यूएस में थोड़ा सा संभलता नहीं है, तब तक ये मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, और इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी भी थोड़ी सी कम हो रही है जी। लगातार हम एफआईएस की लिक्विडिटी का बिकवाली का मोड देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्च का महीना तो देखिए वैसे भी वोलेटाइल होता है, काफी अकाउंटिंग फंक्शंस लोग मार्च के महीने में करते हैं। तो मार्च खत्म होने के बाद होपफुली हमको थोड़ा बहुत रिकवरी मोड दिख सकता है, लेकिन वो उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि फेड के गवर्नर के मीटिंग में एक्चुअली कमेंट्री क्या आएगी। अगर उन्होंने हॉकिश कमेंट्री दी तो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि हम आगे 3-4 महीने या 6 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं करेंगे, तो मार्केट खुश होगा और आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। बट तब तक आपको ये वोलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। So what we're sensing, Avinash, you're suggesting that, it is likely to be like this, risky, volatile. What should market participants do? You said that they should be careful in investing, but how do they focus on managing their risk in this current situation? Yeah, I think my sense is that in the next 1 or 2 days, they should not try to do any short-term trading. If they are looking at even investing in good quality companies which have come down to good quality levels, especially the A group companies, the large cap companies, I think follow a small SIP approach. Don't invest your money in a lump sum. And I think take a longer term view, because these kind of volatile times will not remain forever. But this time also gives you the opportunity to get into some good quality companies at lower levels, because, whenever there is panic, you get a good company at a lower price.
So I think as far as risk management is concerned, please don't deploy your entire money. Just put 25 to 30% and wait for the 22nd meeting for the Fed meeting to get over. I think investors will get lot of clarity once this meeting is over. And once this meeting is over, I think one can take a proper directional call as to, future investments in the market. Right. और अब एशियाई बाजारों की ओर रुख करें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज वृद्धि देखी गई और अमेरिकी शेयर बाजार से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से बढ़त का रुख रहा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1.5% लाभ में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.4% ऊपर आ गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.3% का उछाल आया और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.6% की वृद्धि हुई। हालांकि जापान का निक्केई 225 आज बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की हम बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में आज यहां भारी नुकसान देखने को मिला। फ्रांस के कैक 3.2% के नुकसान में रहा और जर्मनी का डेक्स 2.1% नीचे आ गया। लंदन का FTSE 100 2.5% लुढ़क कर कारोबार कर रहा था। A quick look at the U.S. markets. U.S. stocks bounced back yesterday. The three major U.S. stocks rose amid expectations that the Fed will not be as harsh as predicted earlier after the inflation data and negative reports in the banking sector. The Fed meeting is scheduled next week. The Dow Jones Industrial Average added 1.1%, the S&P 500 rose 1.7%, and the Nasdaq Composite Index gained 2.1%. Avinash, your comments very shortly on, how do we see the international markets now performing, knowing that the sudden shot about banks has come, this thing from the U.S., and already there are issues, baggage issues of inflation. Shortly, please. I think, as I mentioned earlier, the international markets, both the U.S. market specifically, are going to see a lot of volatility. And I think it depends on what kind of Fed policy the federal government now takes. Because, what has happened is because of rise in interest rates, bond yields have gone up, and that has actually incurred a lot of losses on the bond side for most of the banks. In fact, many banks, including the two banks which went bankrupt, like SVC and Signature Bank, are sitting on a lot of M2M losses. Right. Rise in interest rates could significantly make the matter worse. So I think, if the interest rate pause comes in and if there is a commentary that interest rates are not going to come in at least for the next 3 to 6 months, that would be a big relief for the international markets as well as for the Indian market. Okay, right. This is going to be very important. Right. We have a quick look at the oil prices. Global crude oil prices today declined around 2% in intraday trade. Brent crude was trading at around $75.95 per barrel, while WTI crude prices were at $69.90 per barrel when reports last came in. और अब सोने पर नजर डालें। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार वाला सोना 740 रुपए की बढ़त के साथ 58,225 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। मई अनुबंध वाली चांदी 1,364 रुपए मजबूत होकर 68,320 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना उछाल के साथ $1,928.90 प्रति औंस पर था। हालांकि चांदी बढ़त दर्ज करती हुई $22.35 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अविनाश जी, सोने के ऊपर आपके क्या विचार होंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि सोने का भाव तो ऑलरेडी काफी बढ़ गया है और ऐसे समय में हमने आपको बहुत तेजी देखने को मिली है। मेरे ख्याल से इक्विटी अंडर परफॉर्म करेगा तो लोग गोल्ड इसलिए खरीदेंगे क्योंकि वो अपने रिस्क को हेज करने की कोशिश करेंगे। तो नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि थोड़ी शॉर्ट टर्म में और तेजी गोल्ड में पॉसिबल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास गोल्ड है वो मेरे ख्याल से होल्ड करे और गोल्ड में जो खरीदना चाहते हैं वो ETF या टिपिकली अगर कोई गोल्ड बार्स भी अगर कोई खरीदना चाहे तो उस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है क्योंकि इक्विटी को कवर अप करने के लिए, लॉसेस करने के लिए गोल्ड। जी अविनाश जी, अब थोड़ी समय की कमी हो रही है हमसे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। Thank you, Avinash, for your valuable inputs. And now, before we close, a quick reminder of the headlines. Under Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin, 2 crore 18 lakh Pakka houses completed so far. Key domestic indices witnessed losses for 5th straight session. Sensex closes below 57,700 level. Nifty settles below the 17,000 mark. And gold rises to hit 58,000 rupees per 10 gram mark for April contracts at MCX. And that's it in this edition. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.
Market Mantra.